now. Before asking you a question, let me acknowledge the fact that I really like Attack. It was one of those smartest, slickest actioner of recent times. Thank you. I really appreciate that. Thank you. Okay, so my question to you is, sir, being an action star, how do you look upon to this trend where जब भी action film आती है, whenever there is this action genre that has been tried in Bollywood, there it is always under the radar. It has been scrutinized heavily, and but on the other hand, when similar action sequence happen in a pan India film, they got appreciation, तालियां सीटियां बजती है. I have an example. जैसे सत्यमेव जयते 2 में there was a scene where you lifted a bike. वो that was question, but वही चीज जब जूनियर एनटीआर ने आरआरआर में किया, that was appreciated. What do you want to say about it? I think audience is king. You have to respect the audience for what they appreciate and what they don't. And for an actor or an entertainer, it's important for us to accept criticism, put our head down, and go on to our next project. So I'm not negative about this. You must look at everything very positively. So that's all I can say. But yeah, I think if I'm speaking about action, I think Attack has probably amongst the best, if not the best action this country has seen. So I'm. विलन आप हैं, हमने सुना ऐसा। हाँ? विलन आप हैं? आपने ऐसा सुना ट्रेलर देखने के बाद? यार आओ ना, 29 जुलाई को हमारी फिल्म लग रही है, अभी सिर्फ 6 ही दिन बचे। आज सैटरडे है, जब तक फिल्म लगेगी 6 दिन और इंतजार कर लो, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और विलेन कौन है हम चारों में से, वो जानने से ज्यादा मुझे लगता है एक्साइटिंग ये है कि हम क्यों विलेन हैं और हमारी कहानी क्या है, और हर किरदार जो हम निभा रहे हैं, चारों किरदारों के पीछे क्या कारण है कि हम जिस तरह बिहेव कर रहे हैं। उसमें रोमांस, उसमें प्यार, उसमें एक तरफा प्यार बोल लीजिए, उसमें एक पागलपन, एक जुनून बोल लीजिए, वो किस तरह हावी होता है हमारे सारे कैरेक्टर्स पे, वो आई थिंक देखना इज इक्वली एक्साइटिंग। आपको सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो जर्नी है, जिस सवाल की वजह से आप अंदर आ रहे हैं, मुझे ये लगता है जो 2 घंटे 10 मिनट में, बार बार बोल रहा हूँ, 2 घंटे 10 मिनट में जो आपको वो जर्नी मिलेगी, जहाँ पे आपको, जैसे जॉन ने कहा, मोहित सूरी की फिल्म है, म्यूजिक है, रोमांस है, एक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, and it's not only two men going against each other, it's also the women, what they're doing and how they're involved in taking the story forward. So I think climax जो आप चाहते हो कि एक आंसर मिले, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप देखें और एंजॉय करें, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो कैरेक्टर्स के साथ होता है, I think that's equally exciting and equally entertaining, which is what we all aspire to make in this film. So I hope आपको जवाब भी मिले और आप एंटरटेन भी हो और बार-बार जाके देखो। हाय, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल आप सबसे रहेगा। एक अभी जो प्रोमो दिखाया गया उसमें डायलॉग है, हीरो के लिए हीरोगिरी ज़रूरी है, बट आज के टाइम में जिस तरह से कंटेंट से लेकर सिनेमा तक जो बदल रहा है, तो जॉन एंड अर्जुन, मैं आपसे जानना चाहूँगी हीरोगिरी के मायने अब क्या हैं? He wants to know हीरोगिरी के I think मेरे लिए मैं पर्सनल बोल सकता हूँ। अगर मैं अपने आप को हीरो मानना चाहूंगा, आई थिंक इट इज द वे यू बिहेव विद पीपल, इट इज द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ। आप एक औरत की इज्जत किस तरह करते हो, आप बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप जब उन लोगों से मिलते हो जो आपके लिए कुछ नहीं भी कर सकते और किस तरह बर्ताव करते हो उनके साथ। आई थिंक अ ट्रू हीरो इज समबडी, एंड दैट कुड बी फॉर मेल और फीमेल। आई एम सेइंग इट इज हाउ, जिस तरह आप सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, वो आपकी हीरोइज्म होती है, या इसीलिए आप हीरो जाने जाते हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिग डीड्स। हर बार वो बड़ी चीज होना जरूरी नहीं है कि हीरो होने का मतलब है कि हम कुछ कर दिखाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में इट्स simply being respectful, kind and decent. I think that is lacking a lot sometimes in our world today, and I think if you can achieve that on a daily basis, we are all heroes in one way or another. Hi, this is Harshada here from Screen Craft. जॉन, आपके लिए? I think it's a good question. He gave a very good answer. Genuinely, I think he gave a very good answer. मुझे पता नहीं कि MC नितिन है कि अर्जुन है. That is fantastic answer. Genuinely, I'm not just saying it. He's given a fantastic answer. आप अभी तेहरान की शूटिंग करके आ रहे हैं ईरान से, शायद उसमें दावा किया गया कि इंडिया की शायद पहली फिल्म वहाँ पे शूट हो रही है, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? I have not yet gone to Iran, but I'm definitely going to go to Iran because मेरे जो grandfather है, from my mom's side, he came down from Iran. So we are Iranis from my mother's side. तो मैं जाना चाहूँगा, and I would like to take my mother also, क्योंकि मेरे mom के 21 cousins हैं ईरान में, so I would like to take her. Hi, this is Harshada here from Screen Grafia. तारा एंड नीचा, आपको पूछना था कि जब आपके दो हीरो एक्शन का पार्ट संभाल रहे थे, तो आप दोनों का किस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट था? आप कुछ करिए एक्शन वाइज फिल्म में, क्योंकि एक्शन बेस्ड फिल्म इसके लिए। आई थिंक आपने शायद ट्रेलर के अंत में शायद देखा होगा कि हमारे बीच जो केमिस्ट्री है, और जो ऑब्वियसली रोल्स हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते, बट देयर इज डेफिनेटली लॉट्स टू डू मैम।
I think it's a very unique film in that way. And I think I can speak for Disha and myself, and of course she'll tell you more as well. But it's unfortunately, I think this kind of role isn't given to women very often, and I think we're very grateful that this is the start of something new, hopefully in the industry where women can be a little bit badass. Why should all the men have all the fun? Disha, you want to say something about it? I think whatever Tara said is completely true. ये अच्छा है भाई. It's a Mohit Suri's film, and he ensures that girls are strong not just physically but also mentally, and as you can see, emotionally in every way possible. And yeah, you'll see much more when you see it on 29th of July. I like the chemistry in between both of you. Thank you. There's even more. Between Tara and Disha, Between these two. with the girls, right? Yeah. Yeah, I I think just a lot of wanted people to- enjoying the chemistry between Tara and Disha. I think John, you and me can leave now. Let them take over. अर्जुन और जॉन आपसे पूछना चाहूँ अच्छा, इंटरव्यू चल रहा होता है. नहीं, एक सेकंड क्वेश्चन. आप दोनों ही एक्शन के लिए माहिर हैं, तो आपका जब एक्शन का कोरियोग्राफी चल रहा था तो किस तरह से आपने उसको मतलब खुद का इनपुट था कि जो मास्टर बताते गए वही किया आपने? No, I think first you should follow the director's vision जो डायरेक्टर चाहते हैं, क्योंकि एक इमोशनल थ्रस्ट होना चाहिए एक्शन सीक्वेंस में. सबसे जरूरी है कि आपके कैरेक्टर्स क्यों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस चांस टू से दिस. जब हम एक्शन करते हैं एज एक्टर्स, एज हीरोज, व्हेन वी आर डूइंग दिस, वी हैव अ स्टंट टीम, वी हैव ऑल दोस फाइटर्स दैट मेक अस लुक रियली गुड ऑन स्क्रीन. मैम, जेन्युइनली आई थिंक हम कोरियोग्राफी सीख लेते हैं, उनके साथ रिहर्सल करते, वी गो आउट देयर, वो अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं. दे आर विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक श्योर दैट वी लुक गुड. So full credit to them firstly, regardless of the film. इस फिल्म के लिए नहीं, हमेशा I just want to say एक्शन जैसी चीज को ज्यादा कई बार इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बिकॉज लगता है कि सब मस्ती हो रही है. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग टू बी एबल टू डू एक्शन, बिकॉज स्पेशली जब दो एक्टर एक साथ लड़ते हैं, वी हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ ईच अदर. गुस्सा दिखाने के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड आई थिंक आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दैट the first thing when John Abraham came on set to do the action sequences, because we are supposed to hate each other, but we don't. And the good part is that he knows me for a while and he is tha. When he came on set, he just took me camera, they were setting up and everything. हमने सब technicalities कर ली थी. He just stood and he said, Arjun, no matter what happens, safety is above all else. We don't need to injure each other or ourselves at the cost of giving the best shot, because we can do a retake. But if you get injured or you injure me, it'll just put a spanner in the works in the bigger picture. And I think that is a very respectful thing to do as an experienced actor, to come in and put me at ease that I don't need to go all out to try and prove to him that I'm acting like I'm angry, or vice versa, that he's not going to come into my space to try and dominate and make me feel insecure about it. So I think full credit to having a co-actor like him, who's very secure, who's very kind, and who's very straightforward on the first day of an action sequence, to say that puts a young actor at ease. हाँ, मैंने एक्शन जरूर किया है, लेकिन एक दूसरे एक्टर्स का भिड़ने के पहले you need that confidence that you're all on the same page. So director है, stunt team है, we listen to everybody, but at the end of the day, there is a chemistry that you also need to create with your fellow actor, and he, I think, deserves full credit for creating that with me, because मैं चुपचाप शायद कर भी देता. But the fact that he gave me that allowed me to be comfortable and confident with him on and off screen both. I also feel any kind of action, however good it is honestly immaterial. It's the emotion that's backed by the action that makes it special. And I think the emotion in this film is so special that the action looks good. तारा, क्योंकि आप अच्छा गाना गाती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा गाना गाने से लोग पिघल जाते हैं, तो ऐसा हो जाता हाँ, जो मेरे चेहरे पे पसीना है वो इनके गाने की वजह से ही है. एक्चुअली रोज जब मैं इवेंट्स पे जाता हूँ, ये गाना गाती इसलिए पसीना आता है. उसमें ह्यूमिडिटी और लाइट्स का कोई वो नहीं है. तारा, स्टॉप सिंगिंग, इट्स कॉजिंग पिघलना टू हैपन. तो विलेन को आप हीरो में कन्वर्ट कर सकती हैं, ऐसी कला आपके अच्छा, आपके गले में वो ताकत है कि आप किसी विलन को गा के हीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं. आस्किंग, डू यू हैव दैट पावर विद योर सिंगिंग? काश ये पावर होता, बट आई डोंट नो. आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर 29 जुलाई टू सी कि मेरी आवाज में एंड ऑल द सॉन्ग्स क्या ये पावर है या नहीं. यहाँ भी हम सुनेंगे कुछ एक लाइनें आपकी. अच्छा, सीधा मुद्दे पे आना. इतना घूम फिर के जो आया था तू. मैं गाना गाऊं? पागल हो गए. Let's go, Tara. Let's go, let's go. Tara, Tara. ओके, ठीक है, चलो.
अर्जुन भाई बोल Yeah, रहा you should join me. You should join me. Okay. Okay. तेरी गलियां 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 मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तुम सब पिघले कि नहीं? पिघले? मैं तो पहले से पिघला हूँ. Hello. Yeah. Hello. Disha. Hi. Samir here from Movie Talkies. My question is to Disha and Tara. So आज का जो promo है, मेल बॉडीज को ज़्यादा फीचर करता है और फीमेल्स को थोड़ा सस्पेंस में रखता है. Even in the trailer, you two are in the suspense. So don't you think there should be one promo featuring you two? That's a good idea. Superb आप idea, मार्केटिंग sir. टीम की तरफ आओ जरा. कहाँ पे आप मूवी टॉकीज नहीं आप हमारे बालाजी टी सीरीज के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाओ. कम. It's a very good idea. Mohit बहुत wanted बढ़िया this. idea है. Yeah, I think मैंने भी सुना था कि I think Mohit sir wanted this, so it's a good idea. But it's not a bad idea. I think we should consider it. और अभी कोई बोल रहा था कि इतना ट्रेलर क्यों दिखा है? तो देखो, see the difference. See what it is. It's so interesting, right? You can create so much of conversation around just 1 minute of content, right? Yeah, hi, Kenna. Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. Good evening to everybody. I have two questions. The first question is all four of you all. It's a light-hearted question. So obviously, keeping in the spirit of the Valentine's Day. So अगर hypothetically speaking, अगर एक ऐसा मौका आया on Valentine's Day, where all four of you all have to pick one famous villain to date. So starting with the lovely ladies, आप किस नाम? You mean a fictitious character? Yeah, a fictitious. From a film. If you had to choose to go on a date. Or even if, a popular villain from the Bollywood industry or any other industry. So starting with the ladies, if you'll have to go date a noted villain on Valentine's Day, who would that be? I think, sir, I am very, very fond of this gentleman who I've worked with in my second film, Marjava. He was also an egg villain. I think I would have to invite Ritesh Deshmukh. He's just the epitome of villainy, and I think I'd love to have him as a date for Egg Villain Returns. Mogambo, Khushua. Arjun and John, sir, for both of you, a vamp. अगर villain अच्छा, हमको वैम्प भी चूज करना जरूरी है. नहीं, आप अपनी चूज कर सकते हैं villain को भी. क्या अभी जॉन इधर खड़े तो ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन क्या धूम की फ्रेंचाइज के जितने हीरोज उनको डेट करने का मन करता है कभी-कभी, because of how attractive they look in a film. So I remember जब धूम देखी थी, I thought John was looking outstanding, and then for me धूम 2 में जो ऋतिक रोशन लग रहे थे, I did have a small crush on him. So as a villain, I think I would go out on just to hang out with Hrithik Roshan. I would go out on a date. And what about you, John, sir? John, would you like to? Yeah, but John, you missed the boat. I chose John and Hrithik. It's a menage a trois. Okay. John, would you like to, like if you were to go out on Valentine's Day, who would you pick as your villain date? I can't think of anyone right now. I mean, I really can't. If I think of somebody, I'll let you know. Just one last question for Disha. Just looking at your young career so far, when we look at you, you're this divine beauty, and then some of the roles which you've done, they might kind of border a bit on femme fatale. So is this something which, what attracts you to the, for a beauty like you to, what attracts you to these kind of roles? It's for me or it's for you? No, it's for you. It's for you. It's for you. You're the femme fatale. Yeah. No, it's for Tara. Oh, it's for Tara. Oh, Disha. Oh, I thought it's for Disha. So same answer तुम copy paste करो. चलो, हम दिशा को सिखा रहे थे. It's for Disha, right? For you, Tara. For me. सर आप डिसाइड कर लो, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने विलेन वर्सेस विलेन फीमेल वाला आएगा ना, आप ये सवाल फिर से पूछ सकते हैं. Yeah, these roles. Sir, to be honest, I'm assuming because of Tadap and now yeah, this. no, I think it's just so much fun. Sometimes it's good to be bad, sir, and I think it's nice to have the opportunity to do that. I'm very new to this industry, but I think it's more exciting and fun to do something unexpected than your run-of-the-mill heroine roles, which we've seen a dime a dozen in the last many decades of this industry. So I think since we're changing, the industry is changing so rapidly, I think it's just more exciting for us as the young ones
to take the baton forward and just do something different with our skill and our talent and make our voice heard. I think it's about time. Hi, Rashita here from P1 in the center. So my question is to Tara and Disha. Yeah. Don't you feel that actresses are finally getting very meaty parts, as Arjun said, that Ek Villain Returns is not about two men fighting, it's also about the two ladies and why they are the villains, the four of them. So, firstly, what do you think took so long for finally seeing actresses up there doing the action, doing meaty roles? And how much did the role excite you personally? Well, I think once the perception of the audiences changes, the industry will change. It's all about people coming in, watching your films, and I feel like once audiences accept us as, you know, the powerful ones, the strong ones, it'll automatically, everything will just fall into place. And I think I am somewhere, I feel like now spending so much time with Mohit sir that I am somewhere twisted in my head. And, and I feel like that sort of thing that I had in my head came into life through this character. Fantastic. Tara? You know, ma'am, I think it's got a great deal to do with having a conversation about something that perhaps makes us uncomfortable as a society or as a people. And I think over the last few years, women have had a voice and had their voices heard. And I think the fact that we can sit here today as a group of people in a room and just have this conversation, it just makes it more interesting and more exciting for us. And the fact that we can have that conversation makes it more possible to have these roles. My next film, Apurva, that I just announced very recently, is speaking on this very subject about powerful, strong women and having their voice heard. So I think for sure there are more scripts for young actors and young women today, and I think it's great. It's about time. हेलो हाय Oh, hi. अर्जुन सर मेरा सवाल आपके लिए है जी क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान हैं थैंक यू आपने अपने 10 साल के करियर में अपना हर कैरेक्टर इतनी शिद्दत से प्ले किया है क्या बात है क्या बात है मेरा सवाल प्यार पे है सर कहते हैं कि प्यार में किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस फिल्म में भी ऐसा ही प्यार दिखाया गया है तो सर इज इट पॉसिबल रियल लाइफ में भी किसी के साथ होने के लिए उतना ही शिद्दत से कोई हद से गुजर सकता है ये पॉसिबल है रियल लाइफ के लिए भी मुझे तो तेरे से हो गया कुछ सालों से तारीफ की आदत नहीं थी तुझे जिस तरह की अब लगता है कि दुनिया जो चाहे कहे मैं तो शिद्दत अब मैं सच में पिघल गया और उसमें तारा की सिंगिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं सर एक्चुअली आई लव यू सो मच आई लव यू टू व्हाट्स योर नेम रेखा सुथार फ्रॉम रेडियो अड्डा रेखा थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस काइंड वर्ड्स जो आपने कहा वो एक एक्टर यही सुनना चाहता है 10 साल के करियर में जो आपने कहा दैट आई वर्कड हार्ड सो थैंक यू फॉर दैट एंड आई रियली लव यू फॉर दैट आई लव यू अ लॉट टू आंसर योर क्वेश्चन you know the thing is it's very difficult to say कि आप शिद्दत से प्यार कर सकते हैं नहीं because जब आप प्यार में होते हो जब आप किसी से प्यार करते हो आप पूरी शिद्दत से ही कोशिश करते हो कई बार उसमें कुछ रह जाता है या कुछ वर्कआउट नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे ईमानदारी से या शिद्दत से नहीं किया निजी जिंदगी में सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं या आप जो पर्दे पे देखते हैं वो एक कहानी है जिसमें दी एंड आता है हम जब किसी से प्यार करते हैं हमें निभाना भी पड़ता है और वो शिद्दत से निभाना भी जरूरी है प्यार करना आसान है उसे निभाना द सर्कमस्टांसेस आर ऑलवेज गोना चेंज इवॉल्व एंड इन टुडेज सोसाइटी इवन मोर सो बिकॉज यू नीड टू अलाउ योर पार्टनर टू फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट and allow them to be. So I would like to say यार शिद्दत से प्यार करना मतलब एक दूसरे को इज्जत देना के साथ साथ you should be able to enjoy the bad along with the good and I think that is the most important part in society today that sometimes we are not able to go through with love. I think that is the most amazing thing. If you can fall in love and go through the bad days also, that is the true shiddat in mohabbat if you call it. I'm sorry to butt in. I'm sorry, I don't do this usually. I love you के बाद जो बाकी बोला समझ में आया कुछ? कुछ नहीं. She's like blank. I love you. हो गया. जी. Next. We'll take 2 more questions, yeah? जी. ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले बात कर रहा हूँ इस समय.
रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पे आग लगा के रखी है फैंस अच्छे खासे, और काफ़ी लोग उन्हें इसके लिए ट्रोल भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? आप बताइए। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज द थिंग इज यू शुड बी अलाउड टू बी योरसेल्फ, ही इज दैट वे। मुझे नहीं लगता रणवीर सिंह कभी किसी चीज को करते हैं विदाउट बीइंग हिमसेल्फ। कोई दिखावा नहीं है उनमें। आप अभी उन्हें 10, 11, 12 साल से देखते हैं एज मीडिया, व्हेन ही कम्स इन देयर इज वार्म, देयर इज एंजॉयमेंट, देयर इज एनर्जी। वो उनकी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है। उनकी मर्जी है, उनका सोशल मीडिया, उन्हें सही लगता है इस वक्त to be in that way that he wants to be, wants to celebrate being comfortable in his own skin, and I think we should respect that. Having an opinion is fair. I think trolls को तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि importance देनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में, because कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना। आपको जो ठीक लगता है आपको करना चाहिए। Full credit to the boy if he is very happy doing what he is doing. If he is not being forced into it and it's not being done in a wrong or a crude way, you should respect that. He's allowed to do what he wants to do and be happy, and he's making people happy by doing that also. अर्जुन सर। जी सर। जी मिश्रा सामना से। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इंडस्ट्री में लगातार रिटर्न कोई भी फिल्म का सीक्वल बनाने का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या अच्छे कंटेंट का कमी है या प्रोडक्शन हाउस का एक लिमिटेड टीम के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है? सर देखिए, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। जब हम हॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में इतनी चल रही है, वो सब रिटर्न ही आ रही है। अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज अभी चली है, थॉर अभी चली है, तो आई थिंक हॉलीवुड पे भी ये सवाल उठने चाहिए। हेलो, अच्छा उन्होंने दे डोंट वांट दिस आंसर। अच्छा टाइम खत्म हो गया, इतना ही दिया था टाइम। नहीं, बट आई वुड लाइक टू आंसर इट प्रॉपर्ली सो वी कैन एंड इट नाइस। भाई तो यार, अरे रुको 2 मिनट। मतलब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, एक सेकंड। ठीक है, तो मैं आखिरी जवाब देता हूँ, फिर फोटो ऑफ करेंगे। Genuinely, sir, I think it's a worldwide thing. You have to understand the audience today wants to see films that they have enjoyed. You look at Tom Cruise today. He's come back after so many years and is doing Top Gun. Sorry. Yeah, so you have Fast and the Furious, आप टॉप गन भी देख लीजिए। इतने सालों बाद वो फ्रेंचाइज फिर से शुरुआत हुई है और उसमें टॉम क्रूज ही हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूँ, अगर आप एक फिल्म भी देखिए, डायरेक्टर अपनी कहानी को आगे ले जा रहा है। अगर कोई स्टूडियो है या प्रोडक्शन है, अगर कहानी में दम है, लोगों को पसंद आई है और हम अच्छे तरीके से पेश करते हैं, तो बेशक हमें करना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट एंटरटेनमेंट इज। इफ यू आर इमोशनली अटैच्ड टू अ कैरेक्टर एंड वी कैन एक्चुअली मेक यू हैव मोर फन कमिंग टू द थिएटर। दैट हैज नथिंग टू डू विद कि हमारे पास कंटेंट नहीं है। ये जो पहला पार्ट बना था वो तो कंटेंट था ना सर, पहला चला तो अच्छा कंटेंट था, तो वो अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाने का तो हमारा हक है, क्योंकि ऑडियंस का डिमांड है। तो इट्स अ वेरी गिव एंड टेक सिचुएशन। अगर ऑडियंस कंज्यूम करती है और एंजॉय करती है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो थिएट्रिकल हो। I think if you see Bhool Bhulaiya after so many years, there's a second part or a continuation that's come and has done well. So there is no harm in considering it. I think you have to respect the audience. If we do original films, they do well, don't do well. The ones that do well, if they have a chance to have a sequel, then I think we have every right to entertain people. Look at Rohit Shetty sir, उन्होंने गोलमाल की पूरी फ्रेंचाइज बनाई और उसकी वजह से कितने लोग एंटरटेन हुए। तो ऐसा नहीं, आई थिंक सिंघम देखेंगे पार्ट 2 बनी है, उसके बाद सूर्यवंशी में आया किरदार। सो द वर्ल्ड इज अ प्लेस टुडे वेयर यू कैन एक्चुअली एंजॉय कैरेक्टर्स एंटरिंग ईच अदर स्पेसेस, यूनिवर्सेस, and Hollywood is a big starting point of that if you look at it. So I think if you have to ask the question, it is audience driven. Audience enjoys that. Hindustan की audience भी Avengers को उतना enjoy करती है because all of them are coming together. So those are all franchises taken ahead. So yeah, I think that's a very wrong answer. Yeah, one last question. Last. Hi, Preeti here from First India. Okay. 1 मिलियन रिटर्न जिस तरीके से रिस्पांस पा रहा है, बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है सॉन्ग को लेकर या फिर ट्रेलर को लेकर बोला जाए। जानना चाहूंगी बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है अभी तक का प्रमोशन से रिलेटेड? मेरा गला दुख रहा, मैम कितना सोचूं। दिशा, moment while promoting the film, if you had a moment, nicest fan moment. So I have a lot of these young fans and I do love them a lot, and wherever I go I do see them, and yeah, I'm just very glad like I get to meet them in person now finally, because I'm getting out of my house a little more, and yeah, I just love them a lot. Tara? Tara, for you?
बस हो गया कितने लोगों को प्यार दूंगा एक I think हम सबके लिए we've been very lucky. हम बहुत सारे सिटी टूर्स पे गए हैं and I think हमारे सारे portraits बनाए गए हैं by so many fans जो sketch करके हमें देते हैं on stage. So that's been really nice. We've been to Ahmedabad, Nagpur, Pune, we're going to Delhi, so many other places as well. And I think जब वो time निकाल के portraits बनाते हैं हमारे लिए या notes लिखते हैं, that's very very special. John sir. मैं तो प्रमोट करता ही नहीं मुश्किल से मतलब आई कैन स्टैंड विद डिफिकल्टी एंड आई टॉक तो और मेरे हिसाब से अगर फिल्म अच्छी है चलेगी अगर अच्छी नहीं है नहीं चलेगी बट या आई थिंक अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन जानना चाहूंगी कि अभी तक बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा आपके लिए मैं कहाँ गया हूँ प्रमोशन पे लाइफ I guess for everybody, tattoos, you know, so if someone does something like that that cannot be taken off, that means a lot. Lekin, that's a very self-loving thing. So I call them my audience and not my fans. So I think it's a trap we actors fall into. We get consumed by this fan business, and it's a very dangerous trap. I think so. मैं personally मानता हूँ कि at least I'm a person who thinks you must have your alone time and you must know okay what your worth is rather than someone telling you what your worth is. You get what I'm trying to say? कोई अच्छा बोलेगा you'll feel very good, कोई बुरा बोलेगा you'll feel very bad. Don't let that affect you. You know? And the digital media is filled with all this. You know? All right, thank you so much, ladies and gentlemen. You guys have been wonderful. और वो recliner में जो पड़े हुए हैं 4 लोग तो मैं देख रहा हूँ मैं बहुत देर से 29 जुलाई जाना है ऐसे एंजॉय करना है फिल्म. It's time for a quick photo op, ladies and gentlemen. होती है हे बघते थांबा जरा Thank you so much, ladies and gentlemen.
Thank you so much, ladies and gentlemen.